Hey guys, welcome to the third episode of Candid Batchit. Today, the guest for our station is the rising talent of Jamshedpur city, Raj. He is into rap and hip hop art form, and he's dreaming of promoting this hip hop culture in his geographic location. Not only this, but also with his initiative called Jamshedpur Hip Hop TV, he has been helping all the other blooming artists of the city to get a stage and audience to perform. So let's get into conversation with this very talented and dedicated soul to know more about him and hip hop culture. So the very first question for you, Raj, it is that how you were attracted towards this art form, how you came to know about this art form, and then what was that thing which pulled you or just inspired you to take up this art form and as a performer? Actually, I started off this hip hop music thing when I was in class 8th. So one of my friend, he shared me two of the songs of Eminem and Kendrick Lamar. तो हम दोनों को सुने and I was very fantasized कि भाई ये लोग they are talking about their stuff and art जो है art in general is all about expressing what's inside yourself. I mean जो आपके अंदर जो आपका ऑपरेशन है फिर वो चाहे कुछ भी सकता है. एवरीबडी लाइक हर कोई अपने अपने लाइफ में ऑप्रेस्ड है और उस चीज को बताना अपने लैंग्वेज में अपने लोगों को ये मेरे को मोटिवेट करता है अबाउट हिप हॉप. एंड टॉकिंग अबाउट how I was inspired, I was inspired by artists like Kendrick Lamar, KRS-One, because they were talking about their things in their own language, as I said. So I was inspired by these people. It's great to hear, Raj, that how this great personality is imbibed in you also, the art of expressing your stories through such great art forms. Well, moving to the next question. Like every other artist who has some like goal or height they want to reach in the future with their art form, what is that for you? Like how far you want to reach, what is the height you want to achieve with your music, and like what are your future plans and dream collaborations? Talking about the goals, I don't have this any height or goal. I just want to make good music with good artists, and to be very honest, and I just want to keep making music that has some message and people like it. And my dream collaboration would be Kendrick Lamar because he has has given a major impact, and I really appreciate his music. You have no such big plans, but just a simple thing that you just want to spread some good messages through your art form, and that's amazing. Wish you very good luck for your bright future. And the next question for you, a very general question, that what if not a musician? If I was not into music, I would have been serving the country. And I have major respect to the soldiers out there in the borders पे जो लोग हैं उनके लिए मेरे को बहुत major respect है. So if not music, I would have been a soldier or serving my country. Truly, I absolutely agree. I mean, it's hard to put into words that what these armies and soldiers are doing for us at the border. Huge respect for them, actually. And that's great to hear from you as well, that if not music, you would have been serving the country. So that's great. The next question, the very first interest or priority of any artist is to serve the audience and like entertainment on an entertainment basis. But besides that, there are artists who try
who always keep trying to promote some kind of social messages through their art form or through their piece of work. So is there any such for you, or your work is just limited to the entertainment zone? So म्यूजिक एंटरटेनमेंट के लिए होता है. आई गेट इट. आई ऑल्सो मेक म्यूजिक टू एंटरटेन पीपल, बट एंटरटेनमेंट और मैसेज का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से. आई एम नॉट सेइंग कि हर गाना में एक मैसेज डालो. इट्स नॉट पॉसिबल. आप अपनी जो चीज़ें आपके आसपास चल रही है, एटलीस्ट यू नीड टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स इन योर म्यूजिक. आई वुड से मेरे को आई एम नॉट अगेंस्ट दैट कि सिर्फ बिकॉज सिर्फ कोई भी एक चीज़ अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट ही है उसमें, और अगर एक ही तरीके का म्यूजिक बन रहा है तो वो भी तो गलत है ना. मतलब मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि यार आप अपने लोगों की बातें नहीं कर रहे हो तो वो थोड़ा दिक्कत है. यू नीड टू टॉक अबाउट ऑल द टॉपिक्स एंड सोशल मैसेज होना चाहिए. और सोशल मैसेज इन जनरल नहीं, हम बोलेंगे कि आपके गाने में एक मैसेज होना चाहिए, उन गानों का एक मतलब होना चाहिए. एंटरटेनमेंट पर्पस तो ठीक है, बट एक मैसेज और एक कुछ तो मोटिव तो होना चाहिए आपके गाने का. आपके गाने का मतलब क्या है? That's great to hear from your side that you have this thing in your mind that you want to give some kind of social messages or some kinds of message through your artwork, and that's great. And the next question for you: generally rap does contain, like, this is the, I think, truth. I will confess and you have to accept it. Generally rap does contain cuss words and slangs, and how would you like to justify it? I mean, also since you have to make since you have a dream to make it big in a city like Jamshedpur, so what do you think, how easy it will be to grow over there, and will people accept this kind of art form and will support you? आई वुड नॉट जस्टिफाई दिस. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर गाने में गाली हो, बट इट इज ओके. आई मीन फॉर मी इट्स ओके. मतलब अगर जबरदस्ती जब तक आप नहीं दे रहे हो, एक होता है कि भाई वो बंदा सिर्फ गाली ही दे रहा है गाने में, वो तो ऑफकोर्स गलत है. बिना मतलब का कुछ भी अगर कोई बोलेगा तो वो गलत ही है. बट अगर इफ दैट थिंग वट एवर यू सेइंग, अगर यू हैव a specific reason for it, so and it makes sense, so that's completely okay for me. And talking about the city, पहले सपोर्ट नहीं था, अभी भी उतना नहीं है. वेरी लेस पीपल नो कि हम लोग यहाँ पे, हम लोग का जो हिप हॉप मूवमेंट है जमशेदपुर में इतने बड़े तरीके से, इतने ऑर्गेनिक तरीके से चल रहा है. बट येस, पीपल व्हेन दे आर ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ हम लोग जैमिंग करते हैं, या फिर उस जगह पे, तो दे नो द वाइब कि व्हाट इज गोइंग ऑन. यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे द पीपल, अगर रैप बैटल्स हो रहे हैं तो रैप बैटल्स में कभी कभी कस वर्ड्स और बूस्टिंग कंटेंट रहता है, लेकिन वो उस जगह के लिए है, उस जगह के बाहर नहीं होता है. तो लोग आजकल धीरे धीरे समझ रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कि जब तक लोग चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक कैसे वो चीज़ होगा. तो जानना बहुत जरूरी है. That's really amazing to know that you have this faith in your work and in the city, in the people of the city, and I really hope that you may succeed in whatever you are dreaming and trying to achieve. And the next question, here it comes: are you continuing with your academics or you have left it? And also in general, like, do you think it is good it is, sensible to leave academics in order to make something big in this kind of industries or field? Because there is always a risk or probability, you can say, that you would be successful, it's just that you won't be. हम खुद अभी स्टडीज कर रहे हैं. आई एम नॉट लेफ्ट माई स्टडीज. अभी भी स्टडीज चल रहा है, एंड लीविंग स्टडीज इज नॉट अ गुड डिसीजन टू मेक, because studies are very important. Because see, there are a lot of artists in this world, not just India, in this world. And if you talk about in India, बहुत लोग हैं भाई जो लोग म्यूजिक करना चाह रहे हैं,
बट दे आर मेकिंग म्यूजिक, साथ साथ वो लोग जॉब भी कर रहे हैं. तो जॉब बहुत जरूरी है टू गेट जो जॉब कर रहे हो काम, उसमें यू नीड मनी टू सर्वाइव. आपको आप एक गाना बना लिए बट सेकंड गाने के लिए आपको दोबारा से पैसा चाहिए. यू नीड मनी टू रिकॉर्ड योर स्टफ, मिक्स मास्टर, मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. ये सब चीज के लिए पैसा चाहिए. तो ये सब चीज जॉब से ही मिलेगा. अगर किसी के पास रैकेट डील है तो ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन लाइक मी, तो वी नीड मनी टू मेक ऑल दिस थिंग. लेट्स गेट वेरी प्रैक्टिकल विद दिस. हम लोग को वी स्ट्रगल अ लॉट हर चीज में, और सबसे मेजर जो पॉइंट है वो होता है पैसा, मनी. तो उस चीज को मतलब समझो यार कि यू नीड टू कंप्लीट योर स्टडीज एंड एटलीस्ट गेट अ जॉब, और एटलीस्ट डू समथिंग जिससे आपको पैसा मिल रहा है. इफ इट इज, अगर आप अपने मतलब म्यूजिक से कुछ कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप मिक्सिंग मास्टरिंग या कुछ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है. बट देन अगेन मिक्सिंग मास्टरिंग का भी एक डिग्री होता है जिसको करना पड़ता है टू गेट मनी. तो मेरा कहना है कि जॉब और स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, करना पड़ेगा. अगर आप म्यूजिशियन, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हो इंडिया में या कहीं भी, बोले कि आपको करना जरूरी है, स्टडीज कंप्लीट करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. That's very nice to know, because it's really difficult, to go on with two things, and that to something major like academics on its side, which you can't take very lightly, and then also like with a dream to achieve something big. So that's hats off to you. And yeah, the next question, what according to you are those things which make a music video perfect? Yeah. Being a musician, yeah, no, I won't call myself a musician because I only do the lyrics part. I don't know how to make beats or how to mix master my stuff. I have people for that. So if I talk about only the song part, the most important things, not just things, are the first thing is your content. The second thing is uh, the lyrics part. It should be the lyrics part. I mean the content and the lyrics part. उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग. कहाँ से रिकॉर्डिंग पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो. उसके बाद उसका मिक्सिंग मास्टरिंग क्या हो रहा है, मिक्स मास्टर कैसे करा रहे हो उस चीज़ को. द मिक्स शुड साउंड परफेक्ट, द मास्टर फाइल शुड बी परफेक्ट. And this is just the 50% of the whole thing. If you want your song to get views or get streams, so you need to be tight on your promotion thing. आपका promotion बहुत perfect तरीके से करना होगा. You need to pitch it to different places. You need to get a distributor जो आपका गाना different streaming platforms पे डाले. तो ये सारा points है जो कि बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट अ सॉन्ग. क्योंकि आप बस आर्ट वाला चीज़ रख के प्रमोशन वाला चीज़ नहीं छोड़ सकते. टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस, आई डू एवरीथिंग. जो भी है हम खुद करते हैं, एक्सेप्ट द मिक्सिंग मास्टरिंग एंड बीट्स पार्ट, एज आई सेड. बाकी जो प्रमोशन और जो पिचिंग और ये जो जितना भी कुछ होता है, एवरीथिंग इज डन बाय मी. सो you cannot leave the art, you cannot leave the promotion part, business part, and only keep the art side of it. The art side of it is very important, but the business side of it is also very important. So yeah, these are the things. Thanks, Raj, for letting us know about the elements we need to put into music video or this art to make it into a perfect product to cater to the audiences. And next question, for which I am very curious, coming up from a family, like an Indian family, which has nothing to do with rap or the art form you are practicing. How your journey has been? Like, how was the experience while releasing your first music video? How was the journey after that? Was there the presence of parents' support to whatever you were doing and you are doing? जब हम लोग शुरुआत में जो हम लोग चालू किए थे,
तो सपोर्ट तो ऑब्वियसली नहीं था, बिकॉज सी दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड कमिंग अप फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग को हमेशा एजुकेशन 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 बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ था हमेशा से। तो सपोर्ट तो नहीं था, बट स्टिल टॉकिंग स्टिल मेरा सीन ये था कि हम कभी कभी झूठ बोल चल जाते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं दोस्त के घर, या मेरा ये है या मेरा वो है, ऐसे करके हम लोग रिकॉर्डिंग करने जाते थे। बट कभी उसके लिए मेरे को बहुत लड़ना पड़ा उस चीज़ के लिए अपने अपने घर वालों से कि आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, मेरे को ये करना है, इट हैज़ माई फ्यूचर, इससे होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो वही है, घर वालों से सपोर्ट पहले नहीं था, अब धीरे धीरे पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि हाँ करो, मतलब हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है, ऐसे कि हाँ करो, जब तक चल रहा है करो। एंड उनका कहना भी गलत नहीं, आप सही हो और आपके पेरेंट्स भी सही है। सही इसलिए क्योंकि बोथ ऑफ यू वांट यू टू ग्रो, तुम भी चाहते हो कि तुम ग्रो करो एंड बिकम सक्सेसफुल, एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो वांट यू टू बी सक्सेसफुल, बट द वेज आर डिफरेंट। You want to excel in your field, and your parents want you to uh, do it the other way, उनके हिसाब से like, और they don't want you to suffer in this world, they just want you to be happy, and they just want कि at the end of the day आपके आपके टेबल पे फूड हो, it's just that। so इसको उल्टे तरीके से मत लो कि यार वो लोग सपोर्ट नहीं करते, वो ये ऐसे है वैसे, वो लोग नहीं है ऐसे, दे जस्ट वांट यू टू बी सक्सेसफुल, दैट्स इट। तो हाँ, पहले नहीं था, पर अब लोग धीरे धीरे कर रहे हैं सपोर्ट। यस। Yeah, I can totally relate to your words. And then, so yeah, as you said, it's true that it's not their fault, but it's just the probability of being, as I said, like the probability of being successful or not, and the fear of having not a very, like settled future. So yeah, it makes sense, but it also makes the journey harder. Now, coming to the main part, tell us about the idea and concepts which you think before making your projects. Tell us the thoughts behind your projects till date, like East Flow or Bahut Sahi. The as I said, मेरा जो I never think उस तरीके से, मतलब I do think when I write, but आई ऑलवेज राइट माई, जो मेरे को पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आता है, हम उस चीज़ को पेन डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स लाइक ईस्ट साइड फ्लो, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन अराउंड 2017 आई गेस, यस। तो इट द होल स्टोरी रिवॉल्व्ड अराउंड द द सीन ओवर हियर इन जमशेदपुर। उस समय कुछ नहीं था, और जो सीन था वो थोड़ा सा एंड तो उसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई ये चीज़ हो रहा है, जो कि असल में ये चीज़ सही नहीं है, और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। देन इफ आई टॉक अबाउट सॉन्ग्स लाइक वायलेंट गांधी और चिलके में नामिया और these songs, तो वायलेंट गांधी इज ऑल अबाउट द सीए जो प्रोटेस्ट चल रहा था। टॉकिंग अबाउट चिलके में नामिया इज इन, जो वर्ड है, वो वर्ड इज इन हो लैंग्वेज आदिवासी लैंग्वेज है जमशेदपुर झारखंड का। तो उसका मतलब, चिल्के में नामिया का मतलब होता है क्या हाल है, चिल्के में नामिया ब्रो मतलब क्या हाल है ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो। तो उसका वो था। तो इट्स जस्ट दैट कि आई वांट पीपल टू गेट एंटरटेन्ड बाय माय सॉन्ग, ऑल्सो गेट अ मैसेज, एंड और लोग मेरे बारे में जाने कि व्हाट आई टॉक अबाउट। और मेरा मोटिव बस यही कि पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड एटलीस्ट उनके दिमाग में ये थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ यहाँ भी कुछ चल रहा है और ये बंदा भी कुछ कहना चाह रहा है, तो एटलीस्ट लेट्स लिसन टू हिज thing. Cause see, if you talk about your people, जैसे कि
अगर हम तो एग्जांपल ले लेते हैं मुंबई का, ठीक है, तो मुंबई में यू विल सी कि भाई लोग बंटा बच्ची और ये सब बहुत बोलता है, वो वहाँ का स्लैंग है तो वो लोग वो चीज़ बोलता है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ का स्लैंग वो नहीं है तो पीपल वोंट रिलेट टू इट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वी टॉक इन भोजपुरी, वी टॉक इन ये दिवासी लैंग्वेजेस जो भी है, हो मुंडारी और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस है, वी टॉक। और बंगाली लोग यहाँ पे है, बंगाली इन्फ्लुएंस है, बिहारी इन्फ्लुएंस है, तो ये सब चीज़ है, तो वी शुड टॉक अबाउट आर थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से वहाँ पे बंटा है, बच्ची और ये सब जो स्लैंग्स है वहाँ पे इतने पॉपुलर है, और इसकी वजह से वहाँ का सीन को एक ऐसा साउंड मिल गया है, गली साउंड मिल गया है उसको, गली रैप लोग बोलने लगा है। उस तरीके से यहाँ पर भी हम लोग को अपने बारे, अपनी अपनी भाषा, अपने लिंगो में अपनी बातें बोलनी पड़ेगी, जिससे कि लोग एक्सेप्ट करें उस चीज़ को और लोग समझे उस चीज़ को। That's great to know. Also, in the starting only, I introduced and told the audience about Jamshedpur Hip Hop TV. So, tell us about Jamshedpur Hip Hop TV. What made you start this initiative? That too in a city like Jamshedpur, rather than like many other artists who would, who will want to make it big in dream city like Mumbai or maybe Delhi. एक्चुअली जमशेदपुर हिप हॉप टीवी को हम चालू नहीं किए थे। एक्चुअली जमशेदपुर हिप हॉप टीवी स्टार्टेड बाय दिस गाय नेम्ड विपुल जैन। ही केम अप विद एन आइडिया कि लेट्स मेक अ कलेक्टिव आउट ऑफ अस। इस टीम में वी हैव 3 आर्टिस्ट, रैपर ब्लेज, मिस्टर ट्राइब एंड माई सेल्फ। And the video part, the promotion part is done by Zamar Boys, which is again of Vipul Jain. So he manages us. He regulates everything that happens in the team, in the crew. So Jamshedpur Hip Hop TV is a hip hop collective from Jamshedpur. We also look after distribution and all that stuff. As of now, we wouldn't call ourselves as a label, क्योंकि अभी there's a lot more going in the back end. So as of now, we promote every artist whosoever wants to put their music out through us, या अगर वो चाहता है कि if they want, अभी तो we are not signing anybody or we are not doing any deals with any particular artist as of now, because we are working on our backends कि अगर वो और अच्छे तरीके से होगा तो we'll be promoting artists in a better way. So we are now working on the back end. So coming to the point, Jamshedpur Hip Hop TV was started by Vipul Jain. We have 3 artists as of now, and we promote every artist from the city, and it is a platform to everybody whosoever wants to distribute their music through us or put out their songs through us. Also, Jamshedpur Hip Hop TV is not just about making music and uploading music on YouTube. We actually, if you look at the name, it's Jamshedpur Hip Hop TV, right? So TV, why? Because we do a lot of things. पहला तो jamming. Jamshedpur jamming was started by me. So the rappers out here in Jamshedpur, the number in that particular WhatsApp group, वो नंबर है अराउंड 70-80। तो ये सारे बंदे एक जगह मिलते हैं। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड बॉम्बे ब्रू कैफे, वहाँ पे हम लोग मिलते हैं एंड वी डू जैम्स एंड साइफर्स। तो एक हम लोग जैम्स एंड साइफर्स कराते हैं, दूसरा हम लोग पॉडकास्ट भी कराते हैं। अभी हम लोग रुके हुए हैं। We had the podcast called Hip Hop Talks, which we did last year. इस साल भी होगा वो चीज़ continue, where we talk to different artists जो लोग who are successful enough in the field, from the city, from the states, और national level पे भी we talk to artists and हम लोग discuss करते हैं कि what was their journey. We have done Jamshedpur Hip Hop radios where we feature artists, where we feature songs from डिफरेंट आर्टिस्ट जो लोग म्यूजिक बना रहे हैं, बट वो लोग को उतना ज़्यादा लोग नहीं सुनते। तो वी स्टार्टेड द जमशेदपुर हिप हॉप रेडियोज
वाला चीज़ भी, हम लोग इवेंट्स भी कराते हैं, हम लोग गिग्स भी कराते हैं, हम लोग ब्लॉक पार्टीज भी कराते हैं. रिसेंटली जमशेदपुर जैमिंग का 2 साल हुआ, and it was a very happy and proud moment for myself and the whole city. We did this. We did Jamshedpur's first ever block party in the city. So वो एक बहुत सही दिन था. मतलब it was, we celebrated hip hop to the fullest that day. We had dancers, boxers, we had rap battles, we had DJ showcases, we had dance showcases. तो ये सब चीज हुआ. तो हम लोग बस इसीलिए टीवी जमशेदपुर हिप हॉप टीवी नाम है उसका, क्योंकि it's not just making music and uploading it on YouTube and on Instagram. It's a lot more than that. We do whatever we can. हम लोग हर चीज ट्राई करने का जो हम लोग कर सकते हैं to promote the hip hop in our city and to empower the whole movement, the whole hip hop movement in the city. The initiative also needs to be appreciated, like the way you guys thought of not only just promoting yourself, because in this industry there comes a lot of competition as well. So not just about thinking about yourself, but also giving other artists, the other blooming artists, a chance to perform in front of the audience, because every artist needs a stage and audience. Well, I came to know about the block party you held in Jamshedpur recently, and the first ever block party of the city. Explain us the concept, what exactly it is, and how was the response to it? I mean, it was amazing. I had a lot of burden that day, क्योंकि एक ब्लॉक पार्टी पुल ऑफ करना इस कंडीशन में, जो कंडीशन चल रहा है, so this party won't be possible without few people. I would name them. They did a very, they played a very vital role. पहला, it is DJ Besra, the whole cross joint team. There is this guy called Agori 1111. That guy helped a lot. India's finest hip hop has supported us to the fullest for this. They actually covered the whole block party. Also, the video part was done by Crisis Culture. There's this guy named Rishabh. वो उसका initiative है, Crisis Culture. So they did the video thing. They covered the whole. The footage was done by this guy, Rishabh, and his team, Crisis Culture. So coming to the point, the response was amazing. I mean, I had a lot of people that day at that time. उस समय we had amazing battles, DJ showcases also, and coming to the point, DJ मतलब EDM वाला DJ नहीं, and जो DJ आप लोग सुनते हैं वो नहीं. DJ hip hop का एक very essential pillar है DJing. वो उसको हिप हॉप डीजे बोलो या डीजे इन जनरल बोलो, इट्स नॉट द ईडीएम थिंग एंड व्हाटएवर यू लिसन आउट हियर इन जमशेदपुर और इन झारखंड और एनीवे. उस दिन हम लोग बस आर्ट सेलिब्रेट किए थे और कुछ नहीं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा. The next question, Raj, a very basic question, but yes, how internet has impacted your journey and how it has helped you till date? A lot actually. जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय हमारी टीम नई थी, उसको 1 साल ही हुआ था. जैसे लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हो गया, हम लोग रिकॉर्डिंग सब कुछ बंद हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग बस अपने घर पे थे. इंटरनेट प्लेड अ वेरी वाइटल रोल टू कनेक्ट मी टू many people जो लोग अच्छा कर रहे हैं सीन में, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं आर्टिस्ट को अच्छे तरीके से. आई केम अक्रॉस those people जो लोग अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं and they can promote the scene of Jamshedpur and they know how things work in this music industry. We had ciphers online, and the highlight would be that I did a an online gig जिसमें हम MC थे फॉर तन्मय भट्ट का एक इवेंट हुआ था. आई होप यू नो तन्मय भट्ट. सो उनके एक इवेंट में आई डिड MC. उसमें उधर बैटल रैप और ये हो रहा था, तो आई वाज MC ऑफ दैट पर्टिकुलर डे.
तो वो एक हाईलाइट है। एंड और भी बहुत कुछ है। आई वुड जस्ट से कि इट हैज इम्पैक्टेड माई म्यूजिक करियर टू द फुलेस्ट। और इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस के लिए ये लॉकडाउन मेरे हिसाब से अच्छा था, क्योंकि लोग घर पे थे। एंड इफ एनी म्यूजिशियन और एनी आर्टिस्ट, एनी रैपर हैड अ सॉन्ग, अगर वो लोग डालते तो पीपल वर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड दे वर अप्रिशिएटिंग कि हाँ, इधर भी कुछ हो रहा है। तो दैट वाज रियली वेरी good time for me. At the same time, bad also, because there were things happening जो कि those were very disheartening. The COVID thing. True that. I truly agree that how internet is helping all the artists in the house, especially during this pandemic phase where many things were going wrong and not on track. But the one good thing that we actually got to discover many artists being at home, simply at home. So yeah, that's a one positive thing we can count on during this difficult time. And yeah, with this I come up with the next question, that how uh, you were dealing with the obstacles during this pandemic, because like you must be having difficulty in organizing your shows and events, and what was keeping you motivated during this all difficult time or the scenario? Problems तो बहुत फेस हुए, because एक आर्टिस्ट का प्राइमरी इनकम होता है फ्रॉम देयर शोज एंड फ्रॉम देयर गिग्स व्हाटएवर दे डू। एंड हम लोग का पॉसिबल नहीं था टू डू एनी शो और एनी गिग। एंड ऑफ ऑनलाइन जो भी कुछ होता है उसमें people don't get that kind of vibe. As a musician, if I perform in front of you, I mean, अगर हम लोग ऐसा रियलिटी में मिलके हम लोग ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ज़्यादा वाइब देगा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। बिकॉज हाफ द टाइम लोग अपना कैमरा ऑफ कर देते हैं, या तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। आप कुछ भी कर लोगे, ऑनलाइन में वैसा मज़ा नहीं आएगा जो आप लाइव प्ले करके आपको ये होगा। आप सेटिस्फाई नहीं हो पाता एज एन आर्टिस्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाता। इट्स जस्ट म्यूजिक दैट कीप्स मी मोटिवेटेड, एंड द लाइफ एंड द थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी, वो सब देख करके आई फील मोटिवेटेड कि हाँ, कि इतनी कठिनाइयाँ हैं, स्टिल लोग काम कर रहे हैं, और काम करना बहुत ज़रूरी है। It's really inspirational to hear from you, Raj, that how you kept yourself motivated and kept yourself going on in spite of this difficult time where many people actually gave up. So, and it was really actually, it was actually depressing for many people being stuck at home. It was really difficult to cope up with the situation. But I really hope and wish good for everyone. And last but not the least, any advice or messages to the youngsters dreaming to be an artist, be it in whichever field? To be very honest, I am on that verge. I have not made it yet. I'm on that verge. But yes, I would say कि भाई, whatever you guys are doing, just keep doing. Don't stop. It will sometime take 20 years, sometime take 10 years. कभी कभी कोई कुछ महीनों में ही कर लेता है, कभी कभी रातों रात your music goes to gets millions of views and streams. तो it doesn't matters. चीज़ें टाइम लेती हैं, और चीज़ों को टाइम देना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यू गेट मैच्योर। एंड डोंट, आई वुड से दिस कि भाई मतलब डोंट स्टॉप, जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू डू। ऑल्सो बी जेन्युइन अपने क्राफ्ट के साथ, बिकॉज यू डोंट नीड, अगर आप किसी और के जैसा साउंड कर रहे हो, अगर आपका म्यूजिक किसी और के साथ जैसा लाइक करता है, तो फिर वो चीज कर चुका है, आपको कुछ नया करना होगा। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू से यंग आर्टिस्ट को कि बी जेन्युइन विथ योर सॉन्ग, बी जेन्युइन विथ योर म्यूजिक। अगर आप जेन्युइन होंगे तो आपका म्यूजिक और ज़्यादा स्प्रेड करेगा, पीपल विल टॉक अबाउट यू। और वो कैसे होगा, जेन्युइन म्यूजिक कैसे होगा,
वो ऐसे हुआ कि you need to peep inside yourself कि आपके अंदर क्या है. Hip hop is all about the roots. आप अपने roots को जानो, you will definitely sound different from anyone in this industry, and that's very important. That sometimes it lacks, and it's very sad to see कि भाई this particular artist sounds like this particular artist. We just want new music and some fresh music to be put up. तो हाँ, जेन्युइन बनो, अपने अपने अंदर झांको, अपनी अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बाकी हो जाएगा. Thank you so much, Raj, for giving your time and agreeing to this collaboration. Also, to let me put the facts and stuffs related to you in front of my audience. I really wish success and good luck to you for your future and for your career. Yes, I mean, thank you so much for inviting me on this. I really like these questions. मजा आया मतलब. Thanks to the amazing audience as well. Just keep supporting. Don't forget to subscribe, and it will be great if you like, share, and comment. We will meet soon next time with another amazing episode. Till that, take care. Stay at home. Don't forget the third wave is about to approach. So just keep following the COVID guidelines and yeah, stay happy, stay positive.